Hello friends, I am Rameshwar and I welcome you all on my YouTube channel. Friends, today we talk about 19th important topic of the agriculture economics, and in which we talk about the concepts of economics of animal rearing. That is too much important. Friends, before moving ahead, keep in mind one thing. ये चैप्टर ये सेशन आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फिगर दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो बी विथ मी टिल द लास्ट टू नो ऑल द कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग. फाइन फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करेंगे 19 टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और इस सेशन में हम बात करेंगे द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग. जी हाँ, आज हम बात करेंगे द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग. और इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल रियरिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. जी हाँ, यहाँ पे आपके फैक्ट्स एंड फिगर बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे. तो देखिए, कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे द मेजर कंसेप्ट ऑफ एनिमल रियरिंग, इन विच डेफिनेशन एंड मीनिंग और द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल रियरिंग, followed by different types of contribution made for the animal rearing, then certain challenges and issues with concern to animal rearing, and finally we could talk about certain government steps or government initiatives with concern to animal rearing. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में, in which we talk about what is the meaning and basic objective of the term animal rearing. Friends, keep in mind one thing, एनिमल रियरिंग इज वन ऑफ द इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी एनिमल्स का हम यूज कर पाते हैं विथ कंसर्न टू एडिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर फार्मर्स बेनिफिट, वो सब फील्ड आती है. दैट्स वाई कीप इन माइंड एनिमल रियरिंग इज कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट बिजनेस विद इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विथ एनिमल्स दैट आर रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और अदर प्रोडक्ट. इन सब प्रोडक्ट्स के लिए हम जिन एनिमल का यूज करते हैं, सो इन सब को मिला के आता है हमारा एनिमल रियरिंग, विच आर द फील्ड्स और दे आर रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और इवन वुल. सो इन सब को मिला के हमें आता है एनिमल रियरिंग. नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल रियरिंग, फर्स्ट वन, टू मेक लाइव स्टॉक यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. डेफिनेटली जितने भी लाइव स्टॉक है उनका हमें ह्यूमन बींग के लिए क्या इंपॉर्टेंस, क्या यूजफुल होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल. सो इसमें क्या है, विथ कंसर्न टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल रियरिंग वी कैन एबल टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, और थर्ड पॉइंट है सोसाइटी अपलिफ्टमेंट एंड इकोनॉमी इंप्रूवमेंट. डेफिनेटली दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल के हिसाब से सोसाइटी को भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड वी कुड मेक अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी विथ कंसर्न टू मोर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं एनिमल रियरिंग के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब लोगों को उस हिसाब से हम प्रमाण में दे सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ हम बात करेंगे सर्टन पोटेंशियल्स ऑफ एनिमल रियरिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, सबसे बड़ा पोटेंशियल है, वी हैव द लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइव स्टॉक. हमारे पास लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में. करंटली वी हैव 535.75 मिलियन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक. ठीक है, ये फिगर आप अच्छे से ध्यान में रखिए. दिस फिगर इज अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस. ओके, देखिए सेकंड हमारा जो पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिश. अब इसमें क्या है, we are the second largest in fish and also we are the second largest in terms of aquaculture in the world. And again it contributes nearly 1% to our GDP contribution. That is again important one. Apart from that, we could also make our way for the second largest poultry market. It actually acts as a valued sector with concern to our animal rearing. That means that it includes the different types of poultry sector. And we also said that in terms of goats population, we are also ranking some of the ahead one. ठीक है, and in terms of goats population, we have 148.8 million of the goats according to 20th livestock census. ठीक है, so ये हमारे कुछ exactly heads हो गए कि इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते. फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं आवर पोल्ट्री बिजनेस इज नियरली 1 लाख करोड़. इतना हमारा पोल्ट्री बिजनेस आज के कंडीशन में है. ठीक है, अब हम बात करेंगे 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019. देखिए दोस्तों, जनरली क्या हुआ था, 1919 से लाइवस्टॉक सेंसस स्टार्ट हुआ था, और तब ये था कि एवरी 5 years देयर इज अनदर सेंसस, बट ये हर बार सफल नहीं हो पाया. तो 2019 में जो था ये हमारा 20th लाइवस्टॉक सेशन था, सेंसस था. इसके पहले का 19 जो था, इट इज इन द ईयर 2012. ओके, अब इसके कुछ मेन माइलस्टोन्स स्टार्टेड फ्रॉम 1919.
देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स, नॉट ओनली फॉर पॉलिसी मेकर्स, उसके अलावा फॉर द फार्मर्स, फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पॉलिसी मेकिंग पर्सन. सो हर एक के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Then this livestock census is actually under the purview of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. ठीक है. टोटल लाइव स्टॉक ये हमने देखा है इन द 20th लाइवस्टॉक सेंसस में कितना आया था 535.78 विच इज 4.6% मोर देन 2012-19 जो हमारा लाइवस्टॉक सेंसस था वो था 2012 में. सो उसमें 4.6% का इंक्रीज हुआ था. हाईएस्ट इंक्रीज इन द वेस्ट बंगाल, दैट इज 23% इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ लाइवस्टॉक काउंट. ठीक है, लाइवस्टॉक के काउंट में 23% इंक्रीज हुआ था वेस्ट बंगाल में. देन फॉलोड बाय तेलंगाना 22%. ओके, देन आफ्टर दैट उसमें हम कह सकते हैं फॉर द कैटल. नाउ कीप इन माइंड विथ कंसर्न टू कैटल इंक्रीज इज ओनली 0.8%. खाली 0.8% ही हम इंक्रीज कर पाए हैं हेड काउंट में कैटल के. स्टिल we could say that the maximum decrease in Uttar Pradesh in cattle production. There are certain different types of measures are there, but still the decrease is there for in terms of cattle production. अब हम कह सकते हैं in terms of cattle production still crossbreed में 26% उसका increase हुआ है. ठीक है, but still there is a decrease of 6% in indigenous cattle. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. And at the same time the milch animal the increase is 6% for the cattle. Then backyard poultry 46% increase in terms of our backyard poultry, and in terms of bovine population 1% increase is there. Now अब आप यहाँ पे देख सकते there is a comparison in the last three census 2007, 2012, 2019 in terms of our cattle, buffalo, sheep and goats. Okay, the figures are in million. Just take a look about all the three figures. यहाँ पे हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शीप वी रैंक थर्ड, इन टर्म्स ऑफ चिकन वी रैंक फिफ्थ एंड इन टर्म्स ऑफ गोट्स वी रैंक सेकंड. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे देखिए दिस फिगर शोज द इंक्रीज इन परसेंटेज. ठीक है, अब देखिए कि एग्जैक्टली जितना हमारे लाइव स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 35.9% contributed by the cattle itself, then goat 27.8%, buffaloes 20.4%, sheep 13.87%, pigs 1.69% and others 0.23%. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अवेलेबल जितने हेड काउंट है उस हिसाब से. देन वी टॉक अबाउट नाउ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन 2012-2019 ऑफ मेजर स्टेट्स. तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय राजस्थान, then MP, West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra. So these are the typical states are there. Okay, and the figures are in again million. Now we talk about animal rearing for economic development in India. India में economic development के क्या पैमाने हैं with concern to animal rearing. First point, employment opportunity to nearly 8.8% of people. ये बहुत बड़ी बात है. यहाँ पे ध्यान में रखिए 8.8% आर ओनली द हेड काउंट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग इन विच नियरली 50% और नियरली 55% हाउस होल्ड्स आर डिपेंडेंट. ठीक है, हाउस होल्ड नियरली 50 से 55% कहाँ पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 8.8% for the animal rearing. Then food security and diversification. Definitely with concern to animal rearing, different number of foods could be promoted, different number of food sources could be promoted, maybe like eggs, wool, even our milk, meat, fish. So these are some of the examples of animal rearing. Okay, then GDP factor. Now keep in mind GDP factor in terms of GDP, 4.11% contribution of animal rearing to the Indian GDP, and with concern to GDP of agriculture, animal rearing contributes to the nearly 25.6%. ये दोनों फिगर आप अच्छे से ध्यान में रखिए. एनिमल रियरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स 4.11% टू द इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, while it contributes 25.6% to the agriculture GDP. Okay. Then sustainable agriculture development, definitely these are the ways by which you have to sustain for the more prolonged period of time. Base for livelihood, definitely it provides nearly 50% people to the base for livelihood so that they could survive. Okay,
Biogas production, again it is very much important. With the help of cow dung or with the help of different types of waste, they are utilizing this waste for preparation of biogas. Increase standard of living of the people, and again with the help of that we could also say that those people having animal rearing, they could have the promoted in the society, or they have that status in the society, rather than they don't have the animals. Fine. Now we talk about benefits of animal rearing. First, alternative income to farmers. Definitely it is one of the major source to boost your alternative income for the livelihood. Food and nutrition, definitely it is important to provide number of nutritious food or number of food which is there, which are helpful for the nutrition purpose, or which are helpful for the human health. Okay. Self-employment, it provides a way to provide the self-employment to the near ones, to the dear ones, and first of all to the self one. So definitely one of the way to provide the self-employment opportunity. Okay. Then social security, definitely here we could say that a person with having the animal rearing is socially secured one with those who don't have the animal rearing. Okay. रिड्यूसिंग मालन्यूट्रिशन पॉवर्टी, डेफिनेटली देखिए हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जो एनिमल रेयरिंग के हिसाब से मे बी द ब्लू रिवोल्यूशन फॉर द फिश और मे बी द व्हाइट रिवोल्यूशन फॉर द मिल्क. सो मिल्क की जिनके पास अवेलेबिलिटी है, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं, सो डेफिनेटली फॉर देयर लाइवलीहुड मिल्क इज अवेलेबल. Gender equality, definitely more number of women also act in the business, so definitely it reduces the gender equality differences. It is definitely helpful. Now animal waste power, definitely with the help of different types of sources we could utilize the animal waste to the number of various reasons to again have the standard of living in a better manner. हम उससे भी हम अच्छे से इनकम सोर्स हमें जनरेट हो सकती, उससे भी हमें अच्छे से इनकम सोर्स जनरेट होगी. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे सर्टन एग्जांपल्स ऑफ द आवर पोटेंशियल्स, दैट इज नथिंग बट द रिवोल्यूशंस, एंड मोस्ट सक्सेसफुल आर द व्हाइट एंड ब्लू रिवोल्यूशन. तो अब इस बारे में बात करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज द ब्लू रिवोल्यूशन. इट इज टिपिकली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिश, एंड वी कुड से इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन टू द वर्ल्ड. ठीक है. सो उसमें हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर लाइक वी हैव प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू नियरली 16 मिलियन पीपल. एट द सेम टाइम contribution to the GDP is nearly 1%, and there are different government sector initiatives like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It is too much important, but still certain lacunas, certain measures could be needed. वो सबसे ज़्यादा लगेंगे हमें रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फिश सीड्स, at the same time requirement of quality of seed nets. Certain issues are there, like we have to require or we need certain quality fish seeds, at the same time certain quality fish nets, that is too much important. At the same time, to locate the locality of the fish nets or to locate the different types of fish rich zones, we have the availability, we must need the availability. And from the same concern, government provided two different types of satellites like Gemini and Gagan. These are important to locate the fish rich zones. Okay, so that is important from this concern. Now we talk about certain important things for the white revolution. As we know, white revolution is typically important with concern to the milk production, and we rank first in terms of the milk production, so it is too much important. With concern to milk production, we could say nearly 35% of the milk get produced or get processed, but we have to make it double. We have to increase the 36 to the nearly 50% in the coming era. Okay, in 2019 the milk production is 187.7 million tons, that is nearly 6.4% more than the last year. This is again one of the good thing. And government initiatives, we could say Gobar Dhan is one of the major government initiative, in which Gobar stands for galvanizing organic bioagro resource dhan, that is the Gobar Dhan, and that is most important to produce the cow dung or to produce the compost thing. And with the help of that, we could able to provide some of the sources of energy. These are most important from this concern. The major problem in the milk production is nothing but the majority of the unorganized sector. Still we could say that organized sector में इसका प्रोडक्शन उतना नहीं है, एंड मेजॉरिटी इज डन बाय द सम ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. हम कह सकते हैं नियरली 70% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन और द मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन वी हैव टू कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, we must require certain geotagging so that we are able to know the breed
with concern to the location, with concern to the productivity nature, with concern to the climatic change. So from that point of view, geotagging is most important, and we have to again increase the production with the help of Rashtriya Gokul Yojana. That is again important one, to double the production of the milk. Okay. Now we talk about certain important revolutions which are there. So just take a look about all the revolutions. Okay friends, now we talk about certain challenges and issues. The most important first one is the disease outbreak, in which we have to actually different types of infectious diseases are there, certain outbreaks are there. So how to procure from this outbreak is the most important. Then second issue is the productivity. We know we have the largest indigenous cattle breed, but still the problem with concern to the productivity issues. Then advanced technology. यहाँ पे देखिए हमें वी हैव टू कोप विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल रियरिंग. देन फंडिंग प्रॉब्लम. Till now we know only 12% invest in terms of the animal rearing, so that is one of the major concern. So हमें इसको बढ़ाना होगा. Then we talk about the inadequate market access. Definitely friends, people are actually involved in our animal rearing as a source of their livelihood, but the major thing is what, they don't have the market access opportunity. So that is important one. And finally quality checking and standardization, that is important from the grading and standardization, so the farmer or the producer or the trader get more margin. So these are some of the issues. Now we talk about certain important government steps or initiatives. The first and the foremost important is the Dairy Processing and Infrastructure Development Fund. That is important with concern to our animal husbandry and dairy point of view. Second one is the NADCP, that is National Animal Disease Control Program. So this is the main aim is to prevent certain diseases like FMD, foot and mouth diseases, then brucellosis. So these are the two major diseases we have to suffer from. Our animals are suffered from a lot. So हमें इसको cover करना होगा. So from that our target is to actually control the diseases till 2025 and eradicate all diseases till the year 2030. 2030 तक हमें ये पूरा खत्म करना है, पूरा मिटिगेट करना है. That is our concern. Okay. Apart from that, vaccination is the most important point from the NADCP. In the vaccination, we have to make vaccination of 600 million cattle, and in which again the major concern is nothing but we have to vaccinate 36 million bovine cattle. That is too much important. Okay. Now we talk about third one, that is the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. That is again important. In terms of budget 2021, two important initiatives taken by the government. First one is the Kisan Rail and second one is the Kisan Udan. These two are important from the connectivity point of view. We require connectivity from the two sources, backward integration and also forward integration. It means backward means availability of the raw material, while our forward means availability of the distribution channel. So from ये दोनों के हिसाब से हमें किसान रेल एंड किसान उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मनरेगा इज देयर टू प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्डर टू द फार्म्स. So this is important from the concern. Okay. Now we talk about in the, I think yes, in the budget there is again one artificial insemination that is important from the bullocks point of view. Okay. Now we talk about Rashtriya Gokul Mission, that is the RKM. It is typically with concern to the milk production, and with the help of that we have to increase the efficiency or increase the productivity of indigenous breeds. Okay. And finally e-Pashu Hut portal. This portal is typically e-linked one, so that we are able to access all the information with one click. So that is important from the government initiatives point of view. Now we talk about certain measures and suggestions, in which the first important one is the feed and fodder security. It is important to provide high yield varieties so that food and feed security could be maintained. Then certain Niti Aayog recommendations. These recommendations are typically with concern to the indigenous cattle, how to increase the efficiency, productivity of the indigenous cattle and capacity building, so that we could maintain the first rank in terms of the livestock production. Not only maintain, but also we have to increase the productivity for the same.
Then third one is the better credit and insurance. Definitely it is important from the livestock farmers so that they have the equivalent of financial assistance to actually do the animal rearing, and that is important one. At the same time, majority of the animal rearing or majority of our product, like maybe the fish, milk, these are perishable in nature. So to maintain the sustainability, we require cold chain. If we provide it, then definitely that is one of the major suggestions to boost the economy. And finally, SPS, that is sanitary and phytosanitary measures by Codex Alimentaris Commission, that is CAC. So CAC is typically important with concern to the exporting of the commodity. Again, vaccination of the different types of breeds are important to provide the productivity in a better way. At the same time, we have to maintain the hygienic conditions of different livestock. That is important to have the SPS certificate. And friends, SPS certificate से हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है while we are go for the exporting of the commodities. So this is important from this concern. Okay friends, so these are the reference books, Business Management and Economics and Cooperation Marketing and Finance. I will definitely say these are definite helpful to you. Okay friends, I think today's session is definitely useful to you. इसमें आपको सबसे important part जो है that is nothing but 20th livestock session, or we could say 20th livestock census, that is from the animal husbandry department. So that is too much important from your concern. So definitely the session is useful to you. If still you have any query, you could write me in the comment section. I will help you out for the same. And stay tuned for the next session. और यहाँ पे हमारा total syllabus for the agriculture economics are covered. I think just 2 to 3 sessions are required for the multiple choice questions, and then we move towards the food laws. Okay, so stay tuned for the next session. Thank you.